Assalamu alaikum, dear viewers. I have prepared this video to acknowledge the services of our Pak Armed Forces soldiers, to acknowledge the great sacrifices of our soldiers on the border and in the country. And we as a nation also appreciate the great efforts done by our armed forces, Chief of Army Staff, DG and DG ISPR, to bring the political stability, peace and harmony in the country, and to play their positive roles to assist the civil administrations. In the current scenario, इस मौजूदा सिनेरियो में our youths and students are asking questions from us कि मौजूदा सिनेरियो में हमसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और जो यूथ है हमारी, वो हमसे क्वेश्चन करती है कि इस एक पॉलिटिकल थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है या टेंशन्स का जो एनवायरनमेंट है इसमें, तो बीइंग एन एजुकेशनल एक्सपर्ट और बीइंग द प्रोफेसर ऑफ वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी यूथ को और अपने स्टूडेंट्स को एक वो डायरेक्शन दें कि जिस डायरेक्शन की वजह से हमारा पूरा मुल्क जो है वो आगे बढ़े और उसमें पूरे मुल्क का फ़ायदा हो। इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक वीडियो तैयार की है, जो एक मेरे माइंड में एक व्यूज़ हैं, मेरे माइंड्स में जो चीज़ें हैं जो कि हिस्ट्री से भी हैं, और मैं उन चीज़ों को भी डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट मैं आपको थोड़ा सा आई वांट टू डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर पाक आर्म फोर्सेस टू डेवलप द सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, आवर मिलिट्री लीडरशिप्स टू असिस्ट द सिविल वर्क in our country. Firstly, our Pak Army is the world best army of the world, Pak Army. Our last 75 years well managed and disciplined and responsive institutions. इस वक्त we cannot claim कि पाकिस्तान में कोई इदारा इतना well disciplined और इतना responsive है जिस तरह वो पाक आर्म्ड फोर्सेस है, जिस तरह उनका एक पूरा स्ट्रक्चर है। हम किसी इदारे के बारे में क्लेम नहीं कर सकते। वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी एंड हमें तमाम इदारों से हमें काम पड़ता है, लेकिन जो वेल ऑर्गेनाइज, जिस तरीका जो आर्मी का रिस्पॉन्स, खा वो एजुकेशन में, खा वो हेल्थ में, खा वो वापडा में, उस लेवल की परफॉर्मेंस किसी भी इदारे की नहीं है। कंस्ट्रक्टिव रोल इन रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री लाइक गिलगित, फाटा, चित्राल एंड बलोचिस्तान, construction of road, education facilities, water supply scheme, medical facilities through CMHs and medical camps. Similarly, our military troops took part in the relief operations and shifted flood-affected people to safer areas and provide medical aids. During COVID-19 pandemic, Pak soldiers implemented standard operating procedures, including social distancing and masking. More than 40 army hospitals state-of-the-art are functional throughout the country. Frontier Works Organization, raised in 1966, constructed Karakoram Highway, all-weather road, Karakoram Highway. These are few examples. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। यूक्रेन, Russians have attacked on the Ukraine and have destroyed all their civil infrastructures, all their buildings, all their trade centers. The reason is that Ukraine have no strong army and to defend the Ukraine. Similarly, back into the history, American and NATO troops have invaded on the Iraq and in 2003, and they have destroyed all the civil infrastructures. And still there is political instability, and there is a civil war in the Iraq, and thousands or millions of casualties. There are thousands and millions of casualties, and American and NATO troops are responsible for the sectarian division and for the thousands of casualties in Iraq and Middle East. And it is the blessing of Allah on Pakistan that Allah have given us the strong army, and Allah Almighty have given us the nuclear powers,
and the missiles program that defend us from our enemies like Indians and Israelis and other enemies. फर्स्ट देखें कि अमेरिकन अपने 40 कंट्रीज या अपने पूरे नेटो ट्रुप्स के साथ अमेरिकन कैन नॉट सक्सीड इन अफगानिस्तान। और पाकिस्तान में भी कितनी फॉरेन फंडिंग्स है पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह ड्यू टू आवर आर्म फोर्सेस, ड्यू टू आवर इंटेलिजेंस, ड्यू टू दी सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ISI, हमारे ISI के जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो गुमनाम मुजाहिदीन हैं, जिनकी कुर्बानियां हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान में, वो कोशिश तो करते हैं पाकिस्तान